Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to environmental microbiology and the title of my today's lecture is Carbon Cycle. आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बेसिकली कार्बन साइकिल क्या है. So in today's video, मैं कार्बन साइकिल को a bit हायर लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा. मोस्टली जो कार्बन साइकिल जो स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है तो वो बहुत सिंपल सा होता है. ठीक है. लेकिन ये कार्बन साइकिल जो है ये थोड़ा अपर लेवल पे मैं टीच करूँगा. जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं कार्बन साइकिल के दरमियान. सो वो सारे केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो लेक्चर. आप इस एक लेक्चर को लास्ट तक सुने और देखें and I am pretty sure that it will help you a lot. So let's start with the video and stay tuned with me and keep an eye on each and every step of this cycle. Okay, this is an overview of this carbon cycle. ये कार्बन साइकिल का एक ओवरव्यू है. बेसिकली कार्बन साइकिल जो है मीन्स के जो कार्बन कंटेंट्स जो होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में और हमारे वाटर में और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये किस तरह परफॉर्म होता है. ये कार्बन कंटेंट किस तरह मूव होता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस हालत में पाया जाता है. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ क्या कर लेता है कि ये बाहर की तरफ एलिमिनेट हो जाता है. फिर जब ये बाहर ये कार्बन कंटेंट वाले मटेरियल्स और कंपाउंड्स होते हैं तो ये बाहर जाके फिर ये अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं और फिर वापस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको किस तरह अपने अंदर लेते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं. तो ये सारा कार्बन कंटेंट जो है ये मूव करता रहता है इन बिटवीन. So basically, this is basically known as carbon cycle. So let's start with the very first step. Okay, let's choose a pen. Okay, first we will start with the photosynthesis. Basically, जो photosynthesis है आपने इसके बारे में सुना भी होगा. जो CO2 है. Okay, for example, we start from here. CO2. This is our first step. Okay, this is our first step. ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में मौजूद है. ठीक है. So what can happen that this carbon dioxide can be fixed with the help of the photosynthesis and it can be converted into glucose. और ये केमिकल रिएक्शन हमको पता भी है हमने बार बार देखा भी है. यही केमिकल रिएक्शन है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यो फोटोसिंथेसिस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे. ठीक है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं तो हम उसको लेंगे प्लांट्स को नहीं लेते. ठीक है. क्योंकि ये इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है. तो this carbon dioxide can be fixed with the help of that all the process of that light reaction and dark reaction of photosynthesis. Even the microorganism can perform. Okay, they are just like cyanobacteria and blue green algae. Okay, so this carbon dioxide can be converted into for glucose. Okay, तो ये स्टेप अक्सर स्टूडेंट्स को पता होता है. ये एक सिंपल सा स्टेप है. ठीक है. इसके बाद क्या होता है अगर हम और ये वाला पोर्शन जो है ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है ये बेसिकली एरोबिक है. ठीक है. इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है. ठीक है. दिस पोर्शन इन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड दिस पोर्शन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व. तो ये ध्यान में याद रखें. ठीक है. ये रेड कलर जो है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है और ये जो ब्लू कलर है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है. इवन द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फिक्स्ड. इवन the carbon dioxide can be fixed and be converted into organic matter in the absence of oxygen. आप ये जहन में ये बात रखें कि अगर ऑक्सीजन ना भी हो
तो द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फिक्स्ड and can be converted into organic matter just like glucose. Okay, और उस process को कहते हैं chemosynthesis. Okay, so with the help of chemosynthesis the carbon dioxide can be fixed into organic matter. Fixed means it can be converted into organic matter by different microorganism, and those microorganisms are basically anaerobic bacteria. Okay, so chemosynthesis, and what is the process of chemosynthesis? I will show you now. Now this is the process of chemosynthesis. Okay, uh, just look here. This is the carbon dioxide, as I have shown you in the previous slide of that carbon cycle. ये waters के साथ मिलके और basically ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, इसके साथ मिलके ये शुगर बनाता है, ठीक है, ये शुगर बनाते हैं. So just look here, no oxygen is used. Okay, no oxygen is used. Okay, so ये basically ये कहाँ होता है, ये डीप सी फ्लोर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, यही जगह पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड इलिमिनेट करता है. और जो हाइड्रोजन सल्फाइड के दरमियान, जो हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये इतने हाईली इनर्जेटिक होते हैं कि ये ब्रेक होके ये एनर्जी यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है शुगर में. जो एरोबिक जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोसिंथेसिस, तो वो सोलर एनर्जी यूज करके ग्लूकोज बनाता है. यहाँ ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो उसको यूज करके कीमोसिंथेसिस करते हैं और शुगर्स बनाते हैं, ठीक है. तो ये चीज भी अपने जहन में याद रखें कि ग्लूकोज कैन बी glucose can be prepared in the absence of oxygen. तो now you are clear about it कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के बगैर भी बन सकता है, ठीक है. now here these two are the first steps. okay, कि हमारे साथ CO2 फिक्स होके कार्बन जो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है. तो बेसिकली ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी बनाता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी बनाता है. जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो कीमोसिंथेसिस है, ठीक है. अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड में वापस कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. इट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. और जो सबसे जाना पहचाना जो टर्म है रिस्पायरेशन. ओके, this is the most important term, respiration. So respiration is basically aerobic in the absence of oxygen, and respiration can also be anaerobic. और ये दो टर्म्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. अगर हम एरोबिक की बात करें, so for example this is our second step. okay, this respiration. okay, now this is our second step. so if we look here to the in the presence of oxygen, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरह होता है एरोबिक रेस्पायरेशन. इसी तरह होता है. ग्लाइकोलाइसिस है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रेप साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. और ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ वापस आ गया, ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वापस आ गया, ठीक है. तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू भी हो सकती है. ये एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू भी हो सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड कैन also be produced again with the help of the anaerobic respiration. और anaerobic respiration को हम fermentation की भी कहते हैं, ठीक है. और ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ वापस निकल आ गया, ठीक है. तो एरोबिक रेस्पायरेशन में भी हमारे साथ वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वाला, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में भी हमारे साथ वापस फिर आ जाता है, ठीक है. तो ये चीजें जहन में याद रखें. तो ये हमारे साथ सेकंड स्टेप हो गई. ये सारा कार्बन साइकिल है, कार्बन वापस अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है. तो इसके बाद अगर हम फर्दर प्रोसीड करें, तो आई थिंक नाउ these steps are clear about for you people. अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है that is the methanogenesis. okay, methane production. Even the now here methane is also the formula of methane is CH4. तो हम ये देखें कि now this is our third step. okay, now this is our third step, methanogenesis. okay, this is also our third step.
तो मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ये दो चीजें याद रखें। इधर जो है मैं जो दोनों जगह ये चीजें हो रही है, एरोबिक और एनारोबिक। लेकिन जो मीथेनोजेनेसिस है, अब ये देखिए, अब ये एनारोबिक में आ गया। सो मीथेनोजेनेसिस, मीथेन कैन बी प्रोड्यूस, ये जो मीथेन है ये ऑर्गेनिक मैटर से भी बन सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बन सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की पहले बात करें तो जब, अब देखिए मैं आपको केमिकल रिएक्शंस दिखा रहा हूँ। देखिए, यही मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब ये देखिए, ये जो है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग पॉलीमर्स, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम अभी इस मीथेन को इस मीथेन को हम ऑर्गेनिक मैटर से बनाएंगे। तो ये किस तरह होता है, और ये सारा कुछ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कैरी करता है। तो पहले स्टेप में, एज वी नो, पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ठीक है, पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। अब ये हम सिर्फ एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे हम मीथेन बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। ठीक है, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये शुगर्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स, these all large polymers of organic matters are converted into small components of organic matters. After this, फिर क्या हो जाता है? Now here the second step is acidogenesis. The second step is acidogenesis, or simple we can also call it fermentation. Okay, acidogenesis is the second name of fermentation. So simply now we can say fermentation. Okay, I'm writing F here. F-E-R. ओके, सो दिस इज फर्मेंटेशन, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं। तो क्या हो जाता है इन द फर्मेंटेशन, द शॉर्ट द ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ओके, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। जैसे हमने रेस्पिरेशन में, अब अगर मैं आपको फिर दिखा दूं तो यही ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो ये फर्मेंटेशन का एक एग्जांपल है। तो देखिए, फर्मेंटेशन में हमारे साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, फर्मेंटेशन में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और इथेनॉल, लैक्टेट, ये सारे कुछ हमारे साथ फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे साथ रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यही फर्मेंटेशन के थ्रू ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने ध्यान में रखें। ठीक है, now the most important step is the acetogenesis. Okay, acetogenesis is basically the formation of acetone. Okay, yeah, acetate, sorry, not acetone, acetate. Okay, yeah, acetic acid. So acetogenesis, in the acetogenesis, the organic compound or the acids are used to form acetic acid, hydrogen and carbon dioxide. मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखा सकता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज द एसिटोजेनेसिस। द ऑर्गेनिक कंपाउंड is converted into acetate as in the previous slide, and after that this acetate is converted into carbon dioxide, hydrogen and methane. Okay, so this is the chemical reaction. Now look here, now here. So after acetogenesis, the acetic acid, the hydrogen and the carbon dioxide combine in a special type of chemical reaction, and carbon dioxide and methane is produced. So now I think you are clear about it, that how methane is produced by the organic matter. First, hydrolysis is performed. All the large compounds are broken down into small compound. After that, there is fermentation. In the fermentation, the result is hydrogen, carbon dioxide, and short chain fatty acid and alcohol. After that, these alcohol and fatty acids are converted into acetic acid, hydrogen, and carbon dioxide. And after that, these acetic acid, hydrogen, and carbon dioxide combine in a special type of chemical reaction, and methane and carbon dioxide is
produced. Okay, so I think you are clear about it, that how CH4 is produced from, that how CH4 is produced from organic matter. Okay, so I think you are now you are clear about it. The last step is that how methane is produced from carbon dioxide. Okay, methane can also be produced from carbon dioxide. And also keep in mind that we are having this H2 that is produced in the fermentation process, and also it is produced in the methanogenesis, the in this step. Okay, now this is the hydrogen, this hydrogen is basically from the fermentation. Okay, from the, this is the fermentative product. So just keep this hydrogen in your mind. So the conversion of carbon dioxide into methane is also a bit lengthy process. If I show you the diagram, okay, this is basically the process. Okay, I'm not going into the much detail of it, that how carbon dioxide is converted into methane, but just look here, this is a very large pathway. But here the carbon, here this is the carbon dioxide, and with the help of the reduction of carbon dioxide to formyl, and after that the reduction of formyl to methylene, and then methyl, and at the last methane. Okay, so this is a very high process. Sorry, and this is the hydrogen that was the fermentative product. Okay, so this hydrogen can also be used, and at the last methane is produced. So keep this thing in mind, that methane can also be produced from carbon dioxide. Okay, as mentioned in this cycle. And now the last step is that methane can be again converted into carbon dioxide, or simply methane can be oxidized into carbon dioxide. So this is the fourth step. Okay, this is the last and the fourth step. And how it is produced, your, so just keep in mind that mostly methane is produced in the seabeds. Okay, mostly these methane are produced by the microorganism in the deep sea. Okay, so after that, when it is traveling up to the surface of the water, so when it reaches the upper surface of the water, so there is plenty of oxygen there. Okay, there is plenty of oxygen there, and it is easily oxidized into carbon dioxide. Okay, so keep this thing in mind, that when it is moving upwards, when this methane is produced by the microorganism in the seabed, and after that when it is moving, it is a gas, so it will move towards the upper surface. So when it is moving, so the oxygen level is increasing. Okay, so then after that this is oxidized, and it is converted into carbon dioxide and water. So keep this thing in mind, that it is oxidized like this. Now if there is shallow water, and means that there is a huge pollution or water pollution, and there is less content of oxygen there, so even the methane can be produced directly and can be eliminated into the environment directly. So this is just because of the water pollution, because there is less content of oxygen, so then methane can directly move into the air and can be eliminated to the air. Okay, so keep this thing in mind. Or if there is oxygen, so it can be converted into carbon dioxide. So this was all about the carbon cycle. I have shown you each and every step. Okay, you can take screenshots from it, you can use it in your assignments, in your presentation. Okay, so all the steps are interconnected to each other. Carbon dioxide can be converted into organic matter, and this organic matter can give again this carbon dioxide. This carbon dioxide can be converted into methane. This organic matter can also produce methane. After that, this methane can again be converted into carbon dioxide. So these all are interconnected. Here, this is also a carbon monoxide, but it is very rare in rare case. So we are eliminating this. Okay, we are just focusing on this all cycle. You are, I think you have understand it well. If you have any question about it, so you can easily
You can comment me in the comment box. You can ask your question. I will answer you there. Okay. If you have understand this video, so share it with your friend. And thank you for your attention. Thank you very much. God bless you.